Standard 7th Maths, Practice Set 48, Chapter 13, Pythagoras Theorem. Before we start this practice set, let's do little bit of revision of Pythagoras Theorem. See, if any right angle triangle, if you see any triangle which is right angle, which has this 90-degree symbol, it is said to be a right angle triangle, and this side which is opposite to this 90 degree is always said to be hypotenuse. Here side opposite to 90 degree is hypotenuse. Then one side is base, the other side is height. So formula of Pythagoras is hypotenuse square, that means this side AC square is equals to base square. So whatever will be the measure given for base, BC square plus AB height square. So this is the formula for Pythagoras theorem. Any right angle triangle, कोई भी right angle triangle से related sums होगा, we will use this formula. This chapter is basically on this formula. Hypotenuse square is equals to base square plus height square. It is okay to write height पहले भी लिख सकते हो and base बाद में. Okay. So first sums in the figure given below, find the value of x. Here if you see x is hypotenuse. So formula says by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, hypotenuse ln square is equals to mn square plus lm square. So here x square is equals to 24 square plus 7 square. Now 24, 4 4s are 24, no? So here 4 4s are 16, 1 carry, 4 2s are 8, 9, 2 4s are 8, 2 2s are 4. 576 and 7 7s are 49. So x square, after adding this we get 625. So this square will come over here as a root. So we get 625 का square root is 25. So 25 into 25, ये जो root कोई नंबर रूट में आता है ना 625, यानी वी हैव टू फाइंड आउट कि ये रूट सी 25 इंटू 25 625 होता है. सो दो में से एक बाहर निकला, देयरफॉर आंसर टू 625 इज 25. Second sums. See, in this figure here there is 90 degree, that means it's right angle हुआ. Side opposite to this is PR. So by Pythagoras theorem, hypotenuse is PR square equals to base PQ square plus height QR square. So hypotenuse is already given 41 square and PQ is given 9 and QR we will write as it is. So 41 square is equals to 1681.
1681. 9 9s are 81 plus QR square. Now अब देखो, we have to find out this QR. So ये जो है ना यहाँ पे जाएगा. So here it is in addition form. So when it turn its place, so from right hand side to left hand side when it moves, so it will become subtraction, means 1681 माइनस ये उधर गया तो 81 और ये एज इट इज़ वहीं पे है. सो लेट्स एज्यूम यहाँ पे है. ओके, सो नाउ वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 1600. सो ये जो स्क्वायर है, दिस स्क्वायर इट विल मूव हियर एज अ रूट. तो 1600 का रूट हुआ 40. सो देयरफॉर x is equals to 40. Third figure, see, third sum, third figure, here the symbol is given, that means this is the right angle triangle and side opposite to this D is EF. So ये हुआ hypotenuse, ये base और ये height. So by Pythagoras theorem we will say hypotenuse square EF square is equals to ED square plus DF square. So EF is 17 square, ED we have x square, DF we have 8 square. So x square plus 8 is 64 plus 17 are 289. Now this 64 will move here, so वो subtraction बन जाएगा. Let assume हमने यहाँ पे किया मूव, इसको इधर लेके गए तो 289 माइनस 64 और ये एज इट इज़ है. So 9 minus 4 5, 8 minus 6 2, 225. So ये जो स्क्वायर है वो एज अ रूट आएगा. So x 225 is a root of 15. Therefore x is equals to 15. Second sums, in the right angle triangle PQR. See, they have already said us it is a right angle triangle. So let us draw one rough diagram as a right angle triangle. Now what they are saying, triangle PQR where P is equals to 90 degree. So this will be P which is 90 degree. So we are left with QR, QR रह गया. So PQR. Now length PQ is 24, this is 24 and length PR is 10 centimeter. Find the length of said QR. So QR is what, ये 90 degree के opposite में, तो QR बन गया hypotenuse. So by Pythagoras theorem, now in triangle PQR, measure angle P is equals to 90 degree. So therefore segment QR is a hypotenuse. So therefore by Pythagoras theorem, what is the formula? This QR square is equals to PQ square plus PR. Hypotenuse square is equals to base square plus height square. So a hypotenuse QR is not given. Base is 24 and height is 10.
So square of 24 is 576 and square of 10 is 100. See 24, you have to simply multiply like this, 24 into 24, multiplication करके ढूंढना. So 676. देन ये जो स्क्वायर है क्यू आर, ये स्क्वायर यहाँ पे रूट में आ जाएगा. सो 676 इज स्क्वायर ऑफ, सी व्हेन यू डोंट नो बाय हार्ट यू कैन फाइंड आउट इन दिस मेथड. 676 टू डिवाइड करना है इसे, 2 3 ज़ा 6, फिर वापस 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16. हाँ, वी आर डिवाइडिंग हियर. अब अगेन 2, लास्ट डिजिट 4 8 है तो 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, तो 13 माइनस 12, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, 169. 169 डायरेक्ट 13 का टेबल है. 13 1 ज़ा 13, 3 कैरी, 13 3 ज़ा 39 एंड देन 13 1 ज़ा 13. सी 2 13 एंड 2 2, यानी एक 13 लेंगे और एक 2 लेंगे, 13 2 ज़ा 26. सो your answer is 26 for QR. So the length of the seg QR is equals to 26 centimeter. Third sums, in the right angle triangle LMN. So again draw one rough right angle triangle. Triangle LMN where M is 90 degree. So this is your M 90 degree. So LMN. Now what they are saying? If LM, this is 12 centimeter and LN, this is 20 centimeter. Find the length of MN. So this we don't know. See 90 degree के opposite वाला hypotenuse होता है. So in triangle LMN, measure angle M is equals to 90 degree. So therefore sec LN is hypotenuse. So by Pythagoras theorem, what is the formula? Hypotenuse square. So your hypotenuse is ln equals to base square plus height square. So base mn, height lm. Now we don't have this, so here it will be left alone. उसको अलग छोड़ देंगे. ये जो lm है यहाँ माइनस होने आ रहा है, तो इन शॉर्ट ln स्क्वायर माइनस lm स्क्वायर. Now after putting the values, ln is given 20 and lm is given 12. So 20 into 20 400, 12 12 are 144. After subtraction we get 256. Now see, therefore this square will come here, then mn is equals to 16. ये 16 का स्क्वायर हुआ,
and that only we have to find out. So the length of seg MN is 16 centimeter. Fourth sums, the top of a ladder of length 15 meter reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? Now see, ladder means सीढ़ी. So क्या बोल रहे हैं, सीढ़ी का जो टॉप है वो विंडो को टच हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ वॉल, एक दीवार है. सो वॉल इज़ ऑलवेज 90 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड. वॉल हमेशा ज़मीन से 90 डिग्री में रहता है. सो ये वॉल में यहाँ पे समझो वो विंडो है. सो जो सीढ़ी है, सीढ़ी हमेशा टेढ़ी खड़ी होती है ना. तो ये ग्राउंड का टिप है, यहाँ ग्राउंड से ऐसे सीढ़ी विंडो को टच हो रही. सो द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ लेंथ यानी सीढ़ी का लेंथ दिया है, कितना लंबा सीढ़ी है. 15 मीटर रीचेस अ विंडो को रीच कर रहा है. 9 मीटर अबोव द ग्राउंड, ये विंडो अबोव द ग्राउंड ज़मीन से 9 मीटर की दूरी पे है. तो यू हैव 2 मेजर्स. नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल का बेस है, एंड दैट ऑफ द लैडर, और ये लैडर का बेस है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यानी इन शॉर्ट ये वाला साइड ढूंढने बोला. अब ज़मीन हमेशा स्ट्रेट खड़ा रहता है, तो ये हमारा 90 डिग्री हुआ. ओके, ये हमारा 90 डिग्री हुआ. सो लेट गिव नेम टू दिस. सो इसको समझो A, B, C. सो फर्स्ट वी विल से इन measure angle B is equals to 90 degree. Okay, and length AC equals to 15 meter and length BC equals to 9 meter. So in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square. So hypotenuse is AC equals to one side, that means base plus height. So here we have 15 square, base we don't have, and BC 9. So AB square ये यहाँ पे आएगा. So 15 square minus 9 square. 15 are 225, 9 9s are 81, after subtraction 14. So this AB, ये जो स्क्वायर यहाँ रूट पे आएगा, 144 का रूट इज़ 12. आई होप यू ऑल नो टू कैलकुलेट रूट. नाउ दिस इज C. रूट को कैलकुलेट करने के लिए 144, 2 7s are 14, 2 2s are 2 3s are 6, 1 carry, 2 6s are 2 1s are 2 8s are 2 9s are 3 3s are 3 1s are. So ये 2 ये 2 ये 2, 3 2s are 6, 6 2s are 12. See 12. So this AB is equals to 12 meter. So the distance, therefore the distance
between the base of the wall and that of the ladder is 12 meters.